Okay. Yes, It's sir. your 23rd lecture, and I will finish your unit 2 and I will start unit 3 if time allows. So, in the last class, I explained you duality and simplex, how a complicated primal problem can be converted into uh, dual, and then we can solve it easily, by using duality. So we were having four constants in the primal problem, which I discussed in the last class, and then we converted it into dual problem, where constraints reduces to only two constraints, and then we solve using duality, and at the last we apply one rule how to find primal variable from the dual problem. And objective function value was same, and it was coming 10. So that was one concept. Next concept, we have another method which is called dual simplex method. Dual simplex method. Simplex method. So this method is applicable to the LPP. This method is applicable uh, to the LPP starts with infeasible but optimum solution. Infeasible but optimum solution means we will apply the simplex method, then we will see okay, your solution is optimum. Optimum means what? You will see that your all delta j should be पॉजिटिव है ना, ऑल डेल्टा जे विल बी पॉजिटिव, लेकिन जब वेरिएबल्स जो होंगे द वेरिएबल्स दे मे बी नेगेटिव, है ना, सम वेरिएबल मे बी नेगेटिव. So it means what? कि optimum solution तो मिल रहा है because all del j positive, it is the condition of optimum solution, but you are getting some infeasible conditions, है ना, it is not feasible. So then we use this, there we use dual simplex method. So in the problem itself, I will explain this method. I am taking problem number 537. Problem is use dual simplex method to solve. I am considering one problem, minimization problem. Minimize of z is equal to 3x1 plus x2. I am taking problem in two variables only for the sake of convenience, because I just want to explain the method, so you can understand it from this. So you have two constants and non-negative restriction is there. Both are positive, non-negative. Okay, so I want to solve it using dual simplex method. So direct I will not start and solving using your big M or artificial method. I want to use dual simplex method. So let us start. So first thing is same. I will write the problem into maximization. First step, converting into maximization z star. So it will become minus 3x1 minus x2. Now here, as I told you, I will not use the two-phase method. I want to use dual simplex method. So dual simplex, what I will do, because all the equalities are greater than equal to. In normally simplex method, if you remember, the condition was there that these constant b, they should always positive. याद है? Yes, है ना? sir. लेकिन यहाँ पे in dual simplex we don't have such condition. Here I will try to reduce it into a simple method. तो हमें पता है कि अगर I will start with this greater than equal to, I will have to use slack variables and artificial variables. So what I will do, I will convert this problem into less than equal to by multiplying minus 1 on both sides. So constants will become
minus x1 minus x2 less than equal to minus 1 and minus 2x1 minus 3x2 less than equal to minus 2. Okay, here I can take this negative because as I told you कि it will work for optimum but infeasible. So here if you see infeasible हो जाएगा when you will take constants क्योंकि यहाँ minus हो गए है ना. That doesn't make a problem in dual simplex method. तो हमने greater than को less than में change कर लिया by multiplying by minus sign. ये चीज हम simplex में क्यों नहीं कर सकते थे? Because simplex में it was the first condition your initial basic feasible solution should exist. तो वहां पर हमारे पास it must be positive. लेकिन dual simplex में I will take this thing. It is your first step of this dual simplex method. Okay. Of course, our x1 x2 greater than equal to 0. Now I will solve it as usual because now it is less than equal to, so I will use only one select variable for first constant, second select variable for second. No need to use artificial variable. So this problem can be written now. So in standard form, I can write. So in standard form, because before starting, now I want to apply simply simplex method. You know, so I will write in simplex in standard form. Max of z star is minus 3x1 minus x2. I will reduce it into equalities. So I can take minus x1 minus x2 plus s1 is equal to minus 1 and minus 2x1 minus 3x2 plus s2 is equal to minus 2. And the coefficients of these in the objective function cost values will be 0. So 0x1 plus 0s2. Is it clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Where s1 s2 are also positive, it means non-negative. So you know now what is the initial solution not feasible, and I have only initial basic infeasible solution. So you have two constants and four variables, so 4 minus 2 you have to put 2 0 है ना. तो कौन से 0 आएंगे? Of course you will put x1 x2 is 0. So your initial basic infeasible solution है ना, not feasible. Infeasible solution will be what? S1 is equal to minus 1 and S2 is equal to minus 2. Minus 2. Okay. Now I will construct your simplex table. है ना, यहाँ पे ये infeasible है. Next step is same. I will construct simplex table. So let us take. So it is called actually dual simplex table. It is called dual simplex table. So I will take entities will be same like simplex. Here you have CB, YB, your basic variables, XB means its values, and X1, X2, S1, S2. And here you will take, here some steps will be changing in simplex. You will see how in this table. Entities are same, so you have got this S1, S2, and the values are minus 1 and minus 2. So minus 1 and minus 2. Okay. CB 0 0. And they will be what? Your table it will be what? Minus 1 minus 1 1 0. Minus 1 minus 1 1 0 and minus 2 minus 3 0 1. Is it clear? Same simplex table. Yes, sir. है ना? Now you will find your delta J. Of course, objective function value will be 0 because you are getting all x1, x2 0. So z is 0. Now I will find delta J. Achha, Cj, you will write Cj here. So Cj will be what? Minus 3, minus 1, 0, 0. है ना? Cj are the cost values of objective function. Minus 3, minus 1, 0, 0. So del J value is same. Cv, YB है ना, फॉर्मूला जो YB एक्चुअली क्या होता है in this book when they are writing the values in the table,
दे आर राइटिंग इट y1 y2, है ना, जैसे कांति स्वरूप योर टेक्स्ट बुक, तो इसलिए फॉर्मूले उन्होंने CV YB में लिखे हैं, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट सम कंफ्यूजन, तो आई एम राइटिंग x1 x2। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो व्हेन दे आर पुटिंग द वैल्यू इन द टेबल, तो वो इसको y1 लिखते हैं, y1 y2 y3 y4, दे आर डिनोटिंग ऑल द वेरिएबल्स इन द टेबल, सिंपलेक्स टेबल एज अ y, है ना, but you can take x1 x2, you need to calculate only. So first entry will be what, CV x1, है ना, 0 into this, 0 into this, Yeah, and minus, so plus 3, yes, sir. then this is 0 0 1, minus 1 plus 1, this is 0 0. 0, 0. So here you can see that all delta j positive, है ना, here all delta j greater than equal to 0, है ना, and s1 s2 your variables, s1 less than 0 and s2 less than 0. So it means this means you have an optimum but infeasible solution. That means we have an optimum but infeasible solution. ऑप्टिमम तो कहेंगे, हालांकि आपके पास वैल्यू 0 है, लेकिन ऑप्टिमम की कंडीशन तो ये हुआ करती थी, कि ऑल डेल्टा जे शुड बी पॉजिटिव और 0, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो मिल रहा है हमें, लेकिन इनफीजिबल है। सो आवर मोटिव इज टू कन्वर्ट दिस इनफीजिबल सॉल्यूशन इनटू फीजिबल सॉल्यूशन। सो इन द प्रोसेस द ऑप्टिमम वैल्यू विल आल्सो चेंज, है ना, 0 से चेंज होकर इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स मैक्सिमम साइड। सो नाउ टू गेट अ फीजिबल सॉल्यूशन, to get a feasible solution, steps means procedure is same, we have to enter a new basic variable into yb and we have to remove the old variable, है ना, but the procedure will be changed now because you are not getting negative, you will not getting now negative in the del j, लेकिन काम वही करना है हमें, we want to remove the old basic variables and we want to enter a new variable here, है ना, x1 या x2, उसके लिए we have this new algorithm. So now to get a feasible optimal solution, feasible optimum solution, we select a basis vector, ये जो है x1 x2, है ना, basis vector ये तो करना है, to leave the basis, ये जो algorithm है हमारा, and a non basis vector and a non basis vector to enter the basis yb, कैसे, as follows, इसके लिए हम एल्गोरिथम लेंगे as follows, we select a basis vector, so for leaving, है ना, firstly we will see कि which one will leave here, यहाँ पर हम पहले leaving निकालेंगे, उसमें क्या होता था आपको याद हो, पहले हम entering निकाला करते थे, है ना, simplex में what we do normally, firstly we find always which variable will enter, so the most negative, है ना, जो होता था it will always enter, but here firstly I will find leaving variable, ठीक है भाई साकिब, Yes, sir. हाँ, so firstly here I will find leaving variable, so leaving के लिए I have this procedure, this algorithm, I will find the minimum of I is running 1 2 जो आपके variables हैं, x b I, b का मतलब है basis variable, such that x b I less than 0, okay, means what, कि जब आपके पास इनफीजिबल मिल रहा है तो डेफिनेटली इनमें से कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगी, हो सकता है दोनों हो या हो सकता है एक ही हो, तो आई विल फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल दीज basis variables such that they are negative, so you have two and both are negative, so which is minimum, -1 or -2? -2. -2, so -2 is corresponding to S2, है ना, मोस्ट नेगेटिव हम अपने यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव ही देखा है एक तरीके से, यू आर सीइंग द मोस्ट नेगेटिव,
लेकिन मोस्ट नेगेटिव वी विल सी नाउ इन द बेसिस वेरिएबल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा नहीं। तो इन द बेसिस यू हैव मोस्ट नेगेटिव -2, यू नो, है ना, उसी को मिनिमम का। तो -2 इज करस्पॉन्डिंग टू S2, है ना, -2 विच इज करस्पॉन्डिंग टू S2, which is corresponding to S2. So this implies that S2 will leave the basis. S2 will leave the basis. Okay, तो हमें ये S2 पता चल गया, it will be leaving the basis। तो मैं यहाँ पर एरो लगा दे रहा हूँ S2 के सामने, S2 leaves। Okay, now I will find the एंटरिंग वेरिएबल, है ना। तो ये तो आपका लीविंग वेरिएबल का प्रोसीजर हो गया इन डुअल सिंप्लेक्स मेथड। नाउ फॉर एंटरिंग आई विल नॉट टेक मिनिमम रेशियो, क्योंकि मिनिमम रेशियो हम जब लिया करते थे जब यू हैव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हियर, तो यहाँ पे तो दूसरा केस है। सो नाउ आई विल टेक एंटरिंग वेरिएबल। ओके, एंटरिंग वेरिएबल। सो एंटरिंग वेरिएबल में आई विल फाइंड फर्दर, now I will take max of j delta j upon y2j such that y2j less than 0। अब देखो y क्यों लिख रहा हूँ मैंने, ऐसे बताया, एज आई टोल्ड यू कि दे आर यूजिंग दीज वेरिएबल्स y1 y2 y3 y4, तो इसलिए y लिखा है उन्होंने एल्गोरिथम में, है ना, y1 y2 y3 y4। अब y2j 2 मीन्स व्हाट हुआ, योर सेकंड रो। सेकंड रो क्यों चूज करिए, you will take the row which is leaving, तो your second row is leaving। तो सेकंड रो की एंट्रीज क्या है, ये है -2 -3 0 1। तो मुझे क्या रेशियो निकालना है, डेल्टा j अपॉन y2j। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स यू विल फाइंड मैक्स ऑफ डेल्टा 1 अपॉन y21, है ना। अब ये j आपका कहां से कहां जा सकता है, j कैन बी 4। j क्या है, del 1 del 2 del 3 del 4, है ना। तो आई विल फाइंड इन दिस वे del 1 अपॉन y21, लेकिन कंडीशन ये है कि y21 शुड बी नेगेटिव, है ना, y2j शुड बी नेगेटिव। एक्चुअली होगा क्या, ये del 2 अपॉन y22 del 3 अपॉन y23 एंड del 4 अपॉन y24, ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्या है, y2j शुड बी लेस देन 0। तो इसमें इस क्राइटेरिया लेस देन में हु विल बी कमिंग, द वेरिएबल्स, है ना। So there are, you can see only this one is negative and this one is negative. Rest are not negative. So what I will take? I will take only del 1. So del 1 means 3. So 3 upon y21. Y21 is how much? -2. Y21 -2 है ना, हाँ, second row and first column. So I will take only negative. Similarly here, del 2 I can take because del 2 में your y22 is negative. So I can take 1 comma -3। Okay, now these are positive, so I will not take delta 3, I will not take delta 4, है ना, remember, because restriction is what, कि that row should be negative, so only these two will be coming, है ना। This I will not take because your y23 is positive and y2। Okay, so I will find a maximum value। So which one is maximum, tell me, -3/2 -1/3। So you have -3/2 means -1.5 and it is -1/3 means -0.33 something। So which is maximum, -0.2 है ना, this one is maximum, you know, है ना, that means -1/3 and it is coming, ये किसके corresponding आ रहा है, which is coming corresponding to delta 2 upon y22। So this implies that y22 means this second, it is coming from this ratio, so this is coming along x2, है ना, it means x2 will, है ना, which is coming, that means corresponding to x2 variable, x2 variable।
So this implies that x2 will be entering into the basis. ये बात समझ में आ गई भाई, all of you? सर जो वेरिएबल लीव कर रहा होगा उसी के रो में करेंगे ये y2 ये वाला। हाँ हाँ, पहले हम रो फाइनल, पहले रो को हम मार्क कर लेंगे बाय टेकिंग दिस। तो हमें मिल गई कि S2 था, तो हमें पहले रो मिल गई है ना, मैंने इसको रो को एरो लगा दिया, ठीक है। और अब हमने कॉलम इस रो के साथ रेशियो निकाला, 3/-2 1/-3, ये पॉजिटिव थे, आई विल नॉट कंसीडर। तो 2 ही निकले यहाँ पे, अगर चारों नेगेटिव होते तो मैं चारों कंसीडर कर लेता। तो हमें ये कॉलम मिल गया, और जब कॉलम मिल गया तो यू नो कि यू विल बी गेटिंग 1 pivot element also. Which one is pivot element, key element? -3। -3 is the key element, है ना, क्योंकि प्रोसीजर सेम है आपके पास, की एलिमेंट को यूनिटी बनाना है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करना है, बट selecting the entering and leaving variable, it will be changed now. So now -3 we know is the key element. So as usual, I will divide the second row by -3, converting this 1 and rest of the entry 0. So firstly, I will construct a new table, removing S2 and entering which one, x2. So firstly let us take a new table. So now I got a new table, new iterative table. So same, you have cb, yb, xb. So now your variables are s1 as it is, and this will become x2, okay. And now the c value is what, s1 is 0 and x2 is -1, है ना। cj is same, -3, -1, 0 and 0, and here you have x1, x2, s1, s2, okay. Now first thing is what, firstly I will divide by pivot element -3, it is your key element, तो सेम प्रोसीजर, डिवाइडिंग बाय -3 से डिवाइड करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, देखिए 2/3, 2/3, 1, 0 and -1/3, okay. So I am writing by dividing, so it will become 2/3, 2/3, 1, 0 and -1/3, है ना। Now next is you have to subtract. अब देखो ये -1 था, I want 0, what I will do, है ना, it is your R1, हाँ it is your R2, so what I will do, just adding, है ना, you can see it is your R2 star, new row. So in R1 star what I will do, R1 plus R2 star, because R1 has -1, so when you will add it will become 0. So the calculation it will be coming, I am writing -1/3, -1/3, 0, 1 and -1/3, है ना, ये आप लिख सकते हैं, इट इज सिंपल सेम कैलकुलेशन. नाउ अगेन आई विल सी, देखो अभी भी यू डोंट हैव फीजिबल, क्योंकि अभी भी आपके पास S1 की वैल्यू निगेटिव है, तो स्टिल यू आर हैविंग इनफीजिबल सॉल्यूशन, है ना. Now I will take what about delta J. So Z star you can calculate now. Z star will be how much, x1 0, x2 is -2/3, so it will be -2/3. तो अगर आप देखें अभी तो आपका 0 से और नेगेटिव हो गई वैल्यू, है ना, ठीक है, चलो प्रॉब्लम तो आपकी मिनिमाइजेशन की है वैसे भी. Now I will calculate what about delta 1, delta J, same. So delta J you can calculate 0 into this 0, -2/3 and -3. So you have -2/3 plus 3, -2/3 plus 3. How much? 3 3 is 9, -2, 7/3. Similarly you can find it is 0 because x2 is basic variable, इसका coefficient 0, यहाँ del j हमेशा 0 आएगा. It will be coming 1/3, है ना, minus minus plus 1. So again all delta j positive, है ना, again all delta j positive, but S1 is negative. So I will apply again procedure. So firstly I will find leaving variable, है ना, leaving variable या entering था पहले, leaving variable.
So now you tell me, leaving variable will be what? Minimum, as I told you, minimum. रेस्ट्रिक्शन है, दिस शुड बी लेस देन 0. तो यहाँ पर कौन सा है? सिर्फ एक ही है तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव. So you have only -1/3. Only this variable negative. ये तो है नहीं positive. I will not take positive. So it means this S1 will leave the basis. So this row है ना, इसको हम मार्क कर दे रहे हैं. It is leaving. S1 is leaving. Now entering. You tell me which will be entering. बताइए. मैक्स ऑफ. हाँ, मैक्स ऑफ रो आपका ये हो गया. तो कौन सा क्या लूं? फर्स्ट रेशियो इज व्हाट? 7/3 upon -1/3. Yes, 7/3 upon -1/3. Second, I will not take because it is positive. Third, I will not take, it is positive, but it is negative. So I will take now the fourth one. Means 1/3 upon -1/3. You know. So how much it is coming? -7 -1. So which is maximum? -1. You know, you have to take maximum of this. So -1. That means it is corresponding to -1 corresponding to S2, है ना? So this implies that, clear है भाई, -1 by it is corresponding to this S2. So this implies that S2 will enter the basis. So it is your key element. Now you got your key element. This is your key element, है ना? Because this one is entering. Enters. सर S2 ने अभी प्रीवियस स्टेप में ही टेबल से मतलब बेसिस से लीव किया था, अब फिर से वही एंटर कर रहा है. तो क्या हो गया? आ गया ऊपर. अब की बार चेंज होके आएगा. हो सकता है आपके पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ जाए, है ना? ओके तो सर. अगर पॉजिटिव वैल्यू के साथ आ रहा है तो वी आर डन. तो री एंटर कर सकता है वो, यस. क्योंकि Okay, वैल्यू sir. चेंज हो गई अब इसकी है. अब वही वैल्यू नहीं होगी. नाउ अगेन आई विल मल्टीप्लाई एंड देन यू विल सी दैट वी विल बी गेटिंग आंसर, है ना? बस आई विल डिवाइड नाउ बाय दिस. इट इज योर की एलिमेंट. So same, I will construct a new table. So let us construct a new table, final table actually. It is your final table. So dividing by -1/3 in R1 star. आपको स्टार से करिए. So you will be taking this final table, that CV YB XB X1 X2 S1 S2. So YB is now S2 is enters here, okay, and its value is here 0. X2 as it is -1. So when you will divide by -1/3, you can see you will be getting 1 1 0 and -3 1, है ना? R1 स्टार में जब डिवाइड करेंगे, so you will be getting 1 1 0 -3 1. And now here you have -1/3 already. तो क्या करना होगा अब जब ये 1 हो गया? +1/3 R1 स्टार, है ना? But you have now new, so you can see here it is your new R2 sorry R1 double star, suppose I am saying. So now in R2 double star, what I will do, I will take R2 star plus 1/3 R1 double star, this new row. So it will become 1 1 1 -1 0, है ना? ये आपका आइडेंटिटी कॉलम आ गया. Now you can see here, what about delta J? Z star you can calculate here. Z star will be how much? X2 is 1, X1 is 0, -1. मतलब हमने माइनस में लिया था ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका, ये -1 है ना? X1 is 0, मैक्स अभी माइनस का चल रहा साइन, -X2, so -1. And delta J you can calculate now. देखो 0 0
CJ was -3 -1 0 0. So how much? 0 0 -3. So +3 आएगा ये? नहीं, 0 So -1. +2. Yes, +2. Correct. And what about this? 0 -1 -1. ये तो 0 आएगा definitely. S2 भी 0 आएगा definitely. S1, so 0 and minus +1 0. So all delta J positive and you can see all the variables are now non-negative, positive आ गए है ना. So here all delta J positive and all basic variables XBI also positive. So this implies that an optimum feasible solution has been obtained. ना ये आपका इंडिकेशन है. तो व्हाट अबाउट मिनिमम z? सो मिनिमम z क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ मैक्स z स्टार ना. आई विल मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस बिकॉज आई हैव टेकिंग माइनस साइन. सो इट विल बिकम माइनस ऑफ -1 which is 1 at x1 is 0 and x2 is 1. So it will be the final answer of this problem. So is it clear? So in this way you can Yes, use sir. dual simplex method. है ना. आप देखें तो ये आपका कंपेरेटिवली इजी बैठा टू फेस या बिग एम मेथड से, क्योंकि अगर आप ग्रेटर इक्वल टू लेके सॉल्व करते और टू फेस लगाते तो आपको फिर पहले फेज 1 में यू हैव टू रिमूव आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, या बिग एम मेथड में यू हैव टू इंट्रोड्यूस 4 वेरिएबल्स S1 S2 A1 A2 एज अ सरप्लस वेरिएबल्स आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. तो डुअल सिंप्लेक्स से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर मेथड मेंशन होगा तो यू विल हैव टू यूज डुअल सिंप्लेक्स मेथड. और आप इसे ग्राफिकली चेक भी कर सकते हो आंसर को, बिकॉज 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम है. तो you can verify your answer always by graphical method. Okay, so 2 problems I am giving you as a home assignment. 538 page 150 and 540 page number 150. These 2 problems you will do by yourself. Okay, so here your unit 2 finish. Next we have unit 3. In unit 3 we have convex functions. I will start with convex functions, है ना. You have already studied convex sets. Convex set याद है? Yes, sir. Circle is convex set or not? No, sir. No, sir. No, sir. No. What is the convex hull of this circle? Convex This- hull. this- That is. Yes. Yes. चलो थोड़ा थोड़ा याद है. I am happy. Convex hull will become the disk. Circle is not convex, है ना. And disk is a convex set. It is the convex hull also. The smallest convex set containing the set itself is called the convex hull. Okay, good. So I will start with convex functions. What is convex function? And then I will start with GNLPP, General Non-Linear Programming Problem. अभी तक हमने जितनी यूनिट 2 में पढ़ा ये सब आपके लीनियर थे. Now I will take non-linear programming problems. Non-linear programming problems is what? कि your objective function z or your constraints, जिसे मैं gx से डिनोट करूंगा ना, they may be non-linear. Non-linear means what? Sir, polynomial. Polynomial of what degree? Degree 1? Greater than 1. Yes. One. Greater than 1 or maybe product terms, है ना. तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे बी लाइक दिस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और मे बी सम प्रोडक्ट. तो ये सब नॉन लीनियर हो गए. या हो सकता है कि gx जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं दे मे बी लाइक समथिंग x1 क्यूब प्लस x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर x2 स्क्वायर. तो नाउ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट और बोथ मे बी नॉन लीनियर. If it is the case, then we will be dealing with non-linear programming problem. So in non-linear programming problem, I will be considering 4 cases. 2 cases for constraint optimization problem. Constraint optimization problem. Constraint जैसे अभी आपने देखा constraint given होते हैं आपको, है ना. अभी तक हमने जितनी LPP करी उसमें constraints given थे.
ऐसे ही नॉन लीनियर में यू विल बी हैविंग अनकॉन्स्टेंट. Unconstrained problem are also there where constants are not given, only objective function will be given to you and you have to find the maximum minimum value of the objective function. That comes in unconstrained optimization problem. So we will take two methods for constraint optimization problems, two methods for unconstrained optimization problem. Okay, so there also in constraint optimization first method I will take the graphical method, and like in LPP you have seen, in LPP you have seen that your maximum values are always exist at the extreme points, है ना, हमने थ्योरम प्रूव करी थी. But it is not the case in NLPP. In non-linear programming problem, your optimum value may exist inside the region, है ना, in the feasible region. अंदर भी कहीं lie कर सकती है. It is not necessary it will be lying on the boundary. It is one basic difference between LPP and NLPP. Okay? क्या difference है भाई? कि here the extreme values can lie inside the region itself. Okay? Second thing, Yes, sir. आपको मैंने बताया था कि LPP के अंदर योर feasible region is always a convex set. जब भी आप feasible region बनाते हैं वो हमेशा क्या आता है? Convex set आता है ना? जैसे ये आया तो ये convex set है हमेशा. कोई पॉइंट लो अंदर ही लाई करेगा लाइन. याद है ये प्रॉपर्टी? In feasible region is always a convex set. Yes, sir. लेकिन in non-linear programming problem it is not the case. In non-linear programming problem your feasible region may not be convex. They may be non-convex also. आपका non-convex region भी हो सकता है. Okay? So these are the basic differences, and you can see that NLPP is more generalized class to LPP. So these are things we will be discussing in the next lecture. I will start on Monday because now we don't have sufficient time, only less than a minute is remaining. So on Monday I will start with this unit 3 with convex functions and then with non-linear programming problem. Meanwhile you have soft copy of the book, so you also keep studying all these things by yourself, है ना? You just see what are the applications of this general non-linear programming problem, what are the applications of LPP, है ना, which I taught you. These things you just keep searching by yourself. Is it okay? Yes, sir. चलिए. So we will meet on Monday with this new topic and new unit. Okay? So I am ending meeting now because less than a minute. All the best.